and I learned in DAV public school, Which city? Darbhanga. Okay. All right. Very nice. And I see Piyush is here after a long time. Piyush, can you tell a little bit about yourself? How are you? Yes, sir. You have come after a very long time. Where were you? Sir, I am fine. Good. Okay. So introduce yourself because Akshar doesn't know you. Okay, sir. Then I am introduced for me. I am Piyush Kumar Jha. Then I am 8th class and I am living Delhi city and my favorite subject is science. It is done, sir. Good. Okay. So how is the weather in Delhi today? It's good. Yes, sir. It is very good. And how is the weather in Darbhanga today? Sir, It's some nice. cold, some heat. It's still cold. Little Sir, bit. some cold and some heat. Oh, okay. Okay. So it's mixed. Aryan is also here. Okay. So at least we have some of you here. So what you guys have in mind? What do you want to talk about? Sir, I am her younger brother. Oh, you are his younger brother. Okay, good. All right. So, Akshar, do you have any question? You want to talk about anything? Because this is the opportunity for you all to talk. Okay, about science. Not it is not a classroom. It is the outside the classroom where we give opportunity to all students to talk whatever they have in mind about science. Okay. So this is your opportunity. Any topic you have in your mind, you can start talking about it. Yes, sir. Uh, okay. Sir, So my goal is to be a renowned scientist. okay. Your goal is to do what? My goal is to be a renowned scientist. Okay. Very nice. Okay. So you know what scientists do? Yes, sir. What they do? Uh, Sir, they experiment many times for us to do, invent things and help our life. Very good. Very good. Okay. So you guys heard that's what scientists do. Scientists discover new things, but they do it by experiment. Yes, sir. Sometimes, based on the experiment, they come up with the theory. Sometimes they have theory first in their mind, and then they go and experiment to prove it that it works or not. But 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 it's very important in science that we have to have a clear evidence, and other people can also replicate that experiment. It's not like, I have done the experiment, but I'm the only one who can do it. No, anybody should be able to do that experiment. Yes, sir. So that is what is, then the result is considered valid. Okay. So that is Yes, how sir. the science works. Yes, good. Yes, sir. But inventing something by experiment, but it is new. You should have a imaginable thing. If you Yes, don't have that much brain for imagining, you cannot do any experiment on your own. exactly. You're right. So basically, what he is saying, that first you have to create something in your mind, and then you really prove it in the by experiment in physically. But really, you have a model of something which you want to invent first in your head, and then you start working on it. Okay. So that's very good. That is what is called modeling. That you, or in science we call it hypothesis. Okay, that's the new word for scientist. So you have a hypothesis that, for example, this is going to happen like this. Now you go and prove it by your experiment.
to that yes, it works. Sometimes you will find that your hypothesis is correct. Sometimes you will find that your hypothesis is not correct. Then you adjust in your result as well as in your theory what it is. Good. Okay, so very good that you want to become scientist. So this is a good forum for you to come and every Saturday, because there are a lot of scientists and engineer, and we try to communicate with you guys, young generation, how to become scientist and engineer. Okay, so that's from you. Let's see now, Pius. Do you have anything to share? You want to talk about anything? Yes, sir. Yes. Do you want to talk about anything? Today we are giving opportunity everybody to talk a little bit. That is how we'll start. So now it is your turn to talk about something in science, whatever you feel like talking about. Okay, sir. Then 2 minutes, please wait. Yes, sir. We have seen here Ram Shankar ji. Yes, Ram Shankar ji. Thank you. So please say something about yourself. बोलिए रामशंकर जी, नमस्ते, welcome. Good evening, sir. Good Good evening. evening. Good evening, sir. Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening. Actually, Pankaj ji, some guest is coming in my house. Yes, So I yes, don't know, they'll come after then. I'll have to break from here. But till then, I'm there. yes, sir. And Aryan and Piyush is there. And we have Earth is there. And Amarnath ji is there. Amarnath ji, namaskar. Namaskar, namaskar. So I had started kids to talk about something in science. So Yeah, please today, go ahead. Yes. Yes. yeah. So Akshar wants to become a scientist in future. So he has a good idea about what scientists do. So he said, "Now I asked Piyush to talk about it. Piyush, your turn to say something about science. Anything you have in your mind." In the meantime, Amarnath ji, today is a very nice day. There are more than 6 planets visible at the same time. Yes, sir. Wow! Wow! So, and this day will come again after 16 years. So you guys should go back after this meeting and Yeah, look. maybe anybody can talk about it. How is the star looking? Anybody can take a picture outside tonight and show it, share it here. So that What, way, sir? There there is problem in Kolkata. It was very cloudy day है तभी उसमें भी दिखाई पड़ रहा था. yeah, yeah. So this is very good. Okay, so Uh, let's go ahead with Piyush. Hello. so I think let's Piyush is quiet. So let's go to Earth. Earth, do you want to say something about science? No, sir. But Akshar Uh, raised hand. Akshar raised hand. Yes, Akshar. yeah, go Yes, ahead, sir. Akshay. Sir, what a coincidence that even space is making celebrating Science Day. Oh, wow. Very nice. Very very nice. nice, very nice. Yeah, today is a Science Day in India. Yes, yes. Okay.
Very See? nice of you, Akshar. Very. Akshar, by the way, I forgot in which class you are. Your mic is muted. Sir, Yes. I am in class 6. I am a new student. Ye- yes. Yes. Oh, you're a friend of Aryan also, isn't it? No, sir, I don't know him. Oh, so are you able to see Aryan in the video? Yes, sir. And are you able to see Pius also? Yes, sir, but his Yes, camera is sir. closed. And Earth also. Yes, sir. So, So so everybody should come regularly because you will learn a lot by coming to this meeting. So you Okay, must, sir. yeah. we have Ram Shankar ji. हाँ, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को राम शंकर जी. नमस्ते, वेलकम. Sir, I think so. He's in an occasion. He may not be able to speak because of the noise. I see. Okay. So looks like I think I कुछ कुछ आप लोगों को पूछना है तो मलिक जी हैं अभी थोड़ी देर. तो पूछिए सवाल बच्चे लोग, आप लोगों को दिमाग में कुछ है तो. Yes, Aryan, go ahead. Unmute yourself. Yes. Yes, sir. So what? My question is, whenever an electric charge moves, it creates magnetic fields. So is there something like more fundamental that it arises from, or is that the principle that we just accept? Well, no, right now it is a fundamental thing. So it does not arise from something smaller. I don't know what is. No, miss. Suppose the beautiful explanation was given in quantum chromodynamics, where this whenever there is a charge is there and when the field is there is a virtual photon is there which is exchanged. Oh, So it is an exchange of virtual photons. oh, sir. So that's quite a complicated theory, I would say. But that's the base that we have right now. But then this one is a natural thing that if the electric charge moves, it has to create field, and if the electric charge gets accelerated, is it must emit photons. It Okay. is something which is very it is a part of the nature, and it was explained by quantum chromodynamics. That's true. That's I mean, which takes into account that all the fields are created by exchange of particles. And in this case, electromagnetic case, it is the virtual photons. It's a very difficult concept. I also don't, like to, comprehend very nicely. Nicely in the sense that I always feel uneasy about it. But then that's the truth. That explains very well the numbers which it generates are very true to several places of decimals. Okay, sir. So, sir, what was that branch of science that you mentioned? Quantum chromodynamics. So it studies about magnetic fields, right? Yeah, it studies like these electromagnetic interactions. Yes. Okay, sir. And Present question. Piyush has a question now. But then let us welcome first Ram Shankar ji. Ram Shankar ji, can you unmute yourself? Yes, sir. I am now in the present in Yeah, you're welcome actually. So, yeah. Polo Field is a cultural event. So now I'm muted. Oh, so you are in a polo field, is it? Yes, sir. Currently now event in the Mithila Lok Utsav. So I am the current now. So I'm muted. But our student Akshar is we are today celebrate in Science Day in Kilgari, and Akshar is got first position in science quiz competition. So Oh, in good. this appear in this your event.
Congratulations, Akshay. Very good. Thank you. Yeah. We have very bright students in our this thing. I'm very optimistic about my future. So, Ramshankarji, maybe I was not present. Can you introduce yourself a little bit to other people also? Yeah, I am some Ram Shankar Jha in Darbhanga, and a B.Ed graduate and postgraduate, and 10 years experience in as a food industry, working as a area manager in Gujarat, Ahmedabad. Currently now is the seated in Darbhanga, and we work for the Kilgari Darbhanga as a science instructor with the science activity, learning by doing. Oh, that's very nice. Can you tell us your experience about it? It's a very nice thing. That is what our Pankaj ji and Amarnath ji have been thinking about. Yes, Ramshankar ji. Hello, Ramshankar ji. लगता है वो बिजी है अभी ज्यादा, नहीं बोल Oh, पाएंगे। या oh, कोई बात नहीं है। सो एक्चुअली अक्षर कैन एक्सप्लेन व्हाट दे डू देयर। अक्षर, कैन यू एक्सप्लेन, सिंस यू आर पार्ट ऑफ हिज एफर्ट in science education, what happens there? That is what we want to know. Ram Ram Shankar sir teach us in a very unique way. They first tell us theory, then do the experiment, and then doing the experiment, they tell the theory. oh, They do. They did revision just like in experimenting. oh, that's very nice. Yeah. And so he teaches in your school? Sir, school. It is not Kilkadi is not a school. It is Okay. like a non. It is like a non-governmental organization. Uh, in which extracurricular activities are taught. Oh, Oh, okay. very nice. Oh, very nice. I think we would like to hear more from Ram Shankar ji. Maybe if Yeah. not this time, next time. Yes. It is like similar mission. Like Yeah. we are trying to teach you guys, and they are also trying to teach you. So that's very nice. So, Sir, yeah, go ahead. uh, Ram Shankar sir is busy in Kilkadi. It is not a small place. It is very big. It is connected in the full Bihar, Oh, okay, good. all over here. Oh, very nice. This is why they are busy in a program, Mithla Mahotsav. Where is that happening? Mithla Mahotsav, Darbhanga? Yes, sir, in Darbhanga Polo Field. Oh, okay. That's what he is busy. Okay, good. All right. Oh, So, yeah. So when you Akshar, when you do any experiment, what are the things you keep in mind? How do you come up with the idea of doing experiment? What is your starting point? Sir, that uh, sir, please explain the question. Okay, so what I'm trying to say is that you want to do experiment. Yes. Let's say that you want to find let's say you want to find information about mass, and you are comparing mass of different things. Okay, let's make experiment. So that is, let's say that you have a stone piece, you have a dhela, and then you have a iron piece, and you want to compare. That is so how would you do the experiment? Suppose Sir, and what is your objective here? How would sir, you define it? sir, Ram Shankar sir taught this is in unique that if we want to calculate the mass of the air, so we have to take a balloon. Uh, First, we will measure the weight when it is not
it when it has no air, Yeah, then inflated. we will, Hmm. yes sir, then we will pluck it air, and then we will measure the weight. Then we will minus the weight, and then we will get the weight of air. Very good. Malikji, you have anything to add? His experiment. No, no, he has explained it very nicely. Yeah, sure, you have done this experiment. Yes sir, we have done and did the theory So, also. sir, I have one question. So, how do you measure the balloon's weight after we have given it air? Cause it will go up. Sir, can I tell? Hmm. But Sure. in but in Hindi, sir. No, no, Aryan is thinking that if you put air, then the balloon will go up. Then how will you measure it? No, no, but Aryan, if you put helium or hydrogen or something like that, then the balloon will go up. But if you put air, it doesn't go up. Sir, but when you Sir, blow in the balloon, it would be Hmm. mostly oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. Right. So that mixture should go up. How are we So, going so to there, do it? there is a way to come around it. Uh, when you first time measure it without air, Aryan, you Yes. can tie that balloon to your balance, whatever you have, so that it doesn't go. So if the balloon is tied with a balance which you are using for measuring, it cannot go anywhere. And then of course you can say that all the tying, the weight of that will be part of the balloon, so that's fine, no problem. Now you put the air in it, and then balloon cannot go anywhere. Now you measure it second time and take the difference. Will it work? I think so, sir. It should. No, no, but one thing I didn't get, Aryan, if you fill up the balloon with your, let us say, with your mouth, you are filling it up, air from your lungs. So does that balloon go up? No, it doesn't go up. it is Does carbon it? dioxide. Oh, yes. It's only when you fill up with hydrogen or maybe helium, then it will go up. Okay, sir. But why it will go up? If you Sir, fill it up with hydrogen, I think so. It's because of the densities. It is less denser and it goes up. is it because of density? Is I it think so. because of density? Okay, so I think Akshar had said, but Akshar, what I was trying to really quiz you was that whether you understand the variable or not. So when you do any experiment, there that is called basically you have to understand different variables, and then you play with them. You increase one variable, you decrease another variable, or you do both. So there are different ways. So it is very important to understand what are the variables of your experiment, which one you are going to keep fixed, which one you are going to move. Like for example, there are certain times, say for example, experiment related with the temperature, pressure. At one time, suppose you can do it that you can fix the temperature, and you can change the pressure, and then you can do experiment. Another time you can do it that you can keep the pressure constant fixed, and you can move the temperature and do experiment, right? So, or the third option is that you vary both temperature as well as pressure. So these are all design of experiment. When you grow up, you will understand. But key part is that you understand what is variables first. That is, so in any experiment, you have to first identify the different variables, different part of it, which is impacting or influencing the outcome. And then once you have identified those, then you try to play with them by doing your experiment. That is what I was trying to explain to you. Good. Very good. Very good.
Now, Aryan has inspired me to ask a question to all of you, Aryan, Akshar, and Piyush. That Sir Piyush. why does the cloud, which is a water vapor, why does it go up? Why the gravity doesn't pull it down? Sir, I Is think there so no Piyush. gravitational force on the cloud? Sir, I think so Piyush has a question. You should answer that first. Which one? Piyush Piyush. has okay. You want Piyush to answer this, or No, sir, Piyush he has a has a question. He has a question. so my question remains. So all of you think about it. In the meantime, I am asking Piyush what is the question he has. Hello, Piyush. What is the Yes, question? sir. What is it that you want to say? Sir, my question is how do hormones control different function of the human body? Explain with examples. Oh my God, this is a exam question. I really don't know the answer to this. I'm not so very strong in biology. How hormones do it? Ram Shankar ji, are you aware about the answer to this question? He is busy right now. He cannot talk. He cannot. So I do yes. not know about how hormones. I So just know basically, hormones they act. so Piyush, this is we both are from a different part. We are from physics area, so we cannot answer this question. We'll have to find a biology expert. So Pankajji, we have to get some biology or doctor in the meeting to Sure, answer some sure, of sir. these. Yes, sir. Please find some, just send a note that we have some questions coming from students in the biology area or related field which we don't have expertise to answer, so we need some of the scientists from that field. Yeah, So, put it so com- everywhere. coming back to that question, that water cloud is what? Cloud is just water molecule, isn't it? So why the gravity does not act on it to bring it down? Sir, I can try. Yeah, please try. Sir, what I think is that the cloud is made up of small molecules of water and small drifts. Some air can help it move upwards and stay where they are. No, no, why should air be so kind enough to water molecules to send it up? Sir, warm air pushes it up. And, now, which is heavier, the oxygen or the water molecule? Sir, the water molecules. No, come on. See, oxygen is there are two atoms of oxygen, or say nitrogen, there are two atoms of nitrogen. So 14 into 2, 28. Oxygen is 16 into 2, 32. And water is what? H2O means 16 plus 2, 18. So water molecule is lighter than oxygen and nitrogen. Okay. So it would float up. That is why we have clouds there. So it can, because it is lighter, and that we know that the lighter things will go up and heavier things will come down. Uh, yeah, you should also ask how this mechanism takes place. But this is what happens. So, have Did you all everybody heard? get? I think Hello. this is a very very good question which Malikji has asked. Did everybody get it? What he explained, that how he explained what is the H2O versus O2 versus N2. Uh, so basically he discussed about there are उसको atomic structure या atomic weight और number से समझा दीजिए फिर से. I think they didn't pay very good attention to it, but this is very important that they should understand. This is very fundamentals. मालिक जी एक बार और समझा दीजिए उन लोगों को. No, but it was just no. Akshar wants to say. Yeah, you want to say something? Please go ahead, Akshar. About the first
Do you know about the official shortest film in the world? Official? Official shortest film. What is the question? Sorry, I didn't get it. Uh, 1 second, sir. What is the? I will write in messages, sir. No, no, not messages. Can you just speak it out? Shortest Sir, what? what is the shortest film in the world? Film? Yes, sir. No, that's not science. Is that a science question? Yes, sir. It is related to science. Oh, can you tell us the relationship? I don't know. Yes, sir. It is 1 minute 43 seconds, but its name is The Boy and His Atom. Uh, this movie is made by in vacuum place, moving one atom by one frame every time, and then making it in a video. Yes, I sir, I, I've heard about. I couldn't understand. Aryan, could you understand? Sir, they move an atom and they record the next frame, and then they do it, and then they get the shortest frame of a boy and an atom. It's about the atom. They are recording the atom in different frames, and that's how they get it. I've heard about it. Is it movie available for us to see? Can you share Yes, with sir. us? Hmm? Wait, sir, Maybe let you can share with us this movie. We would like to see it. the boy. Yes, in the YouTube, sir. YouTube in. Okay, Why? so just send us the link. Yes, sir. I am doing it. But how do you photograph an atom, by the way? In vacuum, sir. In vacuum, it will not go anywhere. In vacuum, it will not go here, where? But how will you see it? You cannot see with your eye. You Sir, cannot please see see the with link. microscope. Then I how will have you sent see the it? link. I have sent the link, sir. So, sir, No. Yes. we can use an electron microscope. So it Even, is. even electron microscope can't see an atom. No, sir, I doubt that. You think that it can see, is it? Yes, sir. Sir, but the problem would be when it's measured, it may move because of the observer's effect. Well, not observer effect. The question to see something, if We you have want to see something of the dimension of 10 to the power minus 8 centimeter, Sir, then you please. need to have an object which is much smaller than this. The wavelength wise, I'm talking about. So, how do you see? Sir, start it from the start. See any atom anywhere? I'm not sure whether it is authentic or not. it is made by IBM. Sir, it is official. No, there is in science we don't admit unless we understand things. Uh, Whether it is we can official see or them. not official doesn't matter. It has to be. We must ask, why do we think that this is picture of an atom? Sir, no, sir, there are machines that can see atoms. Like they can render and map the atom's position by shooting light at a photon atom. I don't agree, by the way, and you must convince me.
Oh, this is IBM. So Amarnath ji was associated with it. Amarnath ji, Yeah, your company is distributing the picture of the atom. yeah, my old company. You are right. Yes, but I'm not accepting this picture. But anyway, that's good. But let's go to the basic science. That is kind of interesting to know. So um, uh, I s- I thought that there are some other students also. Where is Earth today? He is not here. I thought he was here. He Yes, left. he joined but left now. Yes, sir. Sir, Sir Piyush want to say something. Yeah, go Sure. ahead, please. Yes. Yes, Piyush. Yes, sir. Yes. What Sir, is your I have a question. time? Sir, I have a question. Why do we see lightning before we hear thunder? Explain with reason. Why do we see lightning before We thunder hear. means for a sound? Yeah, I think Akshar has answer. Akshar wants to answer it. Go ahead, Akshar. Yes, sir, because the speed of sound is 300 meter per second, but uh, the speed of light is much more than the sound How of much? thunder. How much it is? Speed of light? Sir, 10 to the power of 8 meter per second. 10 to the power? Of 8 meter per second. No, sir. Oh no, Sir, you I are can answer for too it. much. वो थोड़ा बड़ा हो गया ये तो. Sir, 3 times 10 raised to the power of 8 meters per second. Sir, my Okay. fault. Okay. Okay. Sir, he wants to say something. Sir, Piyush. I can answer for it. Yes, please. Sir, we see lightning before we hear thunder because light travels much faster than sound. Uh, that is what Uh, that is what Akshar is saying. Sir, reason the speed of light is about 3 the speed of light is per second. The speed of sound is 343 meters per second. When lighting happens, both light and sound are produced at the same time, but light reaches our eyes almost instantly. While sound takes more time to reach here the ears. No, so Piyush, so what did you say? What is the speed of light? Sir, the speed of light is about 3 Not lakhs kilometer per hour. Sir, no. Per that's hour? wrong. No, no. Akshar, can you please share what is the light? Just do the Google and share the screen for speed of light as well as speed of sound. We are scientists. We go by exact number, and we have computer in front of us. So let's see the Sir, exact number. 300 meter per second for sound. 300 meter per second, and what for light? Sir, 8 multiply 3 to the power of 10. Okay, so can you tell me how many times more faster is light speed Uh, compared to sound? You must divide it. You divide one by the other, and you get, and that will tell you that how many times faster light is traveling compared to sound. That's one way to compare, right? And that's why you see light first. Oh, no, Akshar, what I heard was very different. You are saying 3 to the power 10. yes, sir. What is the speed you told about the light? What is the speed of light? Sir, 3 multiply 10 to the power of 8. Oh, right, that's correct. What? So meters or kilometers or miles? Kilometer per second. Correct. So roughly, so it is. We say it 3 lakh kilometers per second.
or 1,86,000 miles per second, whatever you like. Sir, the answer will be ones, tens, hundred, thousand, 10,000 lakh. 87,000 for no sir, 8,75,000 times faster than the speed of light is by the speed of sound. Sir, 8 about lakh. 10. No, no, not 8 lakh. This is only 3 lakh kilometers per second. Sir, it's No sir. about. Sir, I am telling about how much the speed of sound is faster than speed of light is faster than speed of sound. Correct, that we agree with you. The numbers we were talking about. Sir, it's about 1 million times. It's Okay. about, Sir, it is 1 million times about. I think so. so roughly you all have an idea that how much time the light from the sun takes to reach Earth? How much time? Sir, 8 minutes 8 20 seconds. sir, 8 minute 21 seconds, 34 millisecond. Yeah, fine. Oh my God, sir. So Akshar has got the latest right value. That's very good. And also, I think Akshar has joined recent now, but Aryan must have already that the light which we get on Earth, though it comes only in 8 minutes, but it was produced almost 1 lakh years before. Have you heard about it? How is the light produced by the sun? Does anyone know about it? How the sun produces light? Yes, sir. How? Sir, it happens due to nuclear fusion. Uh, Yes. it happens due to nuclear fusion, and then it produces a light and photon, and then the light may get absorbed by other atoms, and then it will get re-emitted, and this happens for a long time, and then after that, what happens that it escapes the surface. Yeah, more or less. Yeah, yes, it's correct. Because in the nuclear reaction, what is produced is gamma ray, but what we are talking about, the light, we get light. Yes. So, of course, gamma rays, some gamma rays also they come to us very, very small. X-rays certainly they come little bit. It's one ultraviolet rays are there. The Yes. maximum is in infrared region, but Yes. it is produced by the nuclear reaction, which after the gamma ray makes a Yes. scattering by the atoms a number of times, almost for 1 lakh years. Then it penetrates the core and comes to the surface, and then it reaches Earth in 8 minutes. तो So आप sir, जो आपके ऊपर जो अभी लाइट गिर रहा है सन से 1 लाख साल पहले बना था सन में अभी आ रहा है हाउ yes, नाइस sir. इट इज So sir, I've sended my group's link in the chat so that Akshar can also join. So we will have some classes at Sunday, but right now we will not be having it because of my final exams. So he should join it. There are classes every Sunday about quantum physics. Yes, oh sir. so you teach quantum physics in that Yes, sir. I teach science topics. So latest that we have finished is about quantum electrodynamics, and we'll get into another branch of quantum mechanics soon. so can I join your class as a student Okay, sir. So, sir, but right now we won't be having them. We will having them after my final exams. My exams are going on right now. so Akshar there is a open invitation for you from Aryan to join his classes are Yes. you Aryan, interested You should give more information to Pankaj so that he can publish it also some other places, Okay, sir. and then so that you can have more students. This is a very good effort you are doing. Yes, sir. Good job. Thank you, sir.
So, sir, Udaji has also joined. So welcome, Udaji. sir, Thank you. sir, I've been running it for almost 2 years now. Oh, very nice. See, we have to publicize these kind of works. It's very good work. So, sir, I had a mathematical question. So, I was reading about uh, Einstein, and uh, he needed an conservation law for it. So he came up with one of them, and there was another physicist, Amarnath, who noticed that there it contained a pseudo tensor. So, sir, can you explain what is a tensor to me? Udayji, you want to say something about it? He wants to know what is a tensor. He wants to know about tensor or pseudo tensor. Yeah, he As a wants to hear tensor, it. tensor. I know about a pseudo tensor. What happens in it that the energy in one frame may disappear in the other one. I've read about it. Yes. So tensor is basically you are moving from scalar to vector to matrix and then to tensor. So Okay. that is on a higher rank than the matrices. Sir, I always get confused in these scalar vectors and tensors. Okay, so the scalar does not have any direction. Vector has a direction, and vector is along one direction. Matrices are in more than one direction, or they call it more two rank two. So you have x and y, and tensor is even on a higher level, more than two. So you are looking at so when we talk about matrices, we have y and we for x1, x2, x3, and so on. Tensor goes even on a higher level than matrices, so it is follows that particular pattern. It is of a higher order, I can say. Or you Oh, can also say that scalar is a tensor with zero rank. Vector is a tensor with first rank tensor. Vector is first rank tensor, and so on. So okay, sir. did I manage to explain to you? Yes, sir, I would try to go more in depth with Yeah. these concepts. Yeah. So it is in the same direction. Basically, when we talk about vector, we are talking about a single column. When we are talking about matrices, we talk about multiple columns, or you can have matrices of 3 by 3 or 2 by 2 or something like that. And similarly, when we talk about uh, tensor, it even gets more complicated than this. Um, Okay, So sir. I can give one example to you. Right? Let us say the elastic properties have then as Udayji said that you get in X and Y, it has a different properties. And then it can have another property along the Z direction also. So that means the elastic properties has to be explained in terms of tensors. That is why tensor comes in our life. Okay, sir. First was the scalar, just numbers. Then came vectors. So vectors started having directions. Okay, sir. So you see, so one direction and then two directions and then three dimensions, four dimensions, like that. It keeps on going like that. So Okay, sir. elastic band also, it has got all the different elastic properties in three directions. A general material. Okay, sir. Sir, So it is explained by the tensors. the Piyush and Akshar has some questions. Yes, Pius, go ahead. Sir, can I leave the class now because I have to go in a function? Sure, sure, I think. So, thank you, sir. Nice way. And tell your teacher he is doing a very good job.
and we are very happy about it. And maybe next time he should come and explain to us that what is he doing, so that we will also know from him. We are very much impressed. Okay, Ask sir. also your friends to join this class every Saturday. Okay, same time, same link. Okay, sir. Okay, bye. Yes, Piyush, you had question? Good. Yes, sir. You have a question, Piyush? No, sir, I have no question. Okay, if you have no question, then I have one question. Will you please, some of you answer Okay, it? sir. Why does this aurora which is seen, always seen either in the North Pole side or the South Pole, not on the equator? Sir, repeat for question. If you want to see aurora, हाँ. aurora, no, that you see in the sky, screen-like thing, moving, green color, red color. Yes, sir. Yeah, but we don't see in India. We see always in the North Pole side or the South Pole side. Why? Then I am answer for it. You want to Hmm. answer? Yeah, please go ahead. Oh, Ram Shankar ji has joined now. Ram Shankar ji, Pankaj ji, Ram Shankar ji has joined. So he's continue, but I think he is in a event. Yes, Ram Shankar ji, Is he please talk. available or Yes, Ram जी Shankar सर, ji. जी सर, yes, yes, Ram Shankar ji. यस सर. Yeah, we want to know. You're doing a very fantastic job. We wanted to know what Sir, are I am answer you. for it. Yeah, just Piyush, just 1 minute. So Ram Shankar ji Okay, will sir. say few things. यस सर. He is in, I think, in event. Yes, Ram Shankar ji. जी सर, पूछा जाए. नहीं, हम लोग पूछ रहे थे कि आप जो कर रहे हैं साइंस डे में, और अक्षर ने बताया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, साइंस कैसे लोगों को ये कर रहे हैं, पॉपुलर कर रहे हैं. जी सर, जैसा कि हम लोग न्यू ईयर में आए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, हम्म. लर्निंग बाय डूइंग. यहाँ किलकारी में जैसे कि, और पटना किलकारी है जैसे सारे कमिश्नरी में खुला है, तो दरभंगा किलकारी में अभी तक नहीं खुला हुआ था. तो इससे पहले मैं जॉब कर रहा था, तो मैं ऑटो पे स्थित था. तो मेरे एक मित्र थे जो किलकारी में ऑलरेडी चेस इंस्ट्रक्टर हैं, तो हम्म. उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आपको इससे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो आप किलकारी आइए और इस विधा को स्टार्ट कीजिए. तो 2 जनवरी से मेरा इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, और तब से सिर्फ मैं 2 दिन के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम हैं उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं. तो उसमें जिनको जो जो विधा पसंद है, चाहे कराटा हुआ, कबड्डी हुआ, चेस हुआ, आर्ट हुआ, क्राफ्ट हुआ, डांस हुआ, जितने भी जिसको नो एनी बच्चे को फ्री छोड़ा जा रहा है कि वो 10:30 से लेके 6 PM तक जब भी वो आना चाहे आए, और जितना देर उनकी इच्छा हो सके वो यहाँ सीखते हैं. तो चूंकि जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, तो एक डॉक्टर नरेंद्र नायक थे जिन्होंने उस वक्त, हम लोग दरभंगा से चुने गए थे स्टूडेंट, 2010-11 की बात बता रहा हूँ, जो अंधविश्वास के प्रति साइंस फॉर सोसाइटी ने सीतामढ़ी में 10 दिनों का ट्रेनिंग दिया गया था, जिसमें प्रैक्टिकल मेथड से बताने के लिए कि आप इसको साइंस को समझो, और अंधविश्वास को दूर करने के लिए उस वक्त
बिहार का जो साइंस सोसाइटी है उसमें हम लोगों को भाग दिया गया और बताया गया था कि आप लोग इसको स्कूल स्कूल में जाके और भी बच्चों को ट्रेन करके आप ये अवेयरनेस जो है आगे बढ़ाइए। इससे पहले मैं जो भारत का विज्ञान प्रसार है जो साइंस अवेयरनेस को आगे बढ़ाता है, तो हम लोगों ने साइंस क्लब भी चला रखा था। तो जब मैं प्रॉपरली एक्टिव था तो अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं कोई भी ऐसा एक्टिविटी दरभंगा में नहीं होता था जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। भाई प्रोफेशन अब लोगों को जीवनचर्या में कमाना है, तो मुझे जल्दी अपॉर्चुनिटी मुझे गुजरात में मिल गया तो मैं वहाँ जाके अर्निंग करने लगा और मैं जॉब करने लगा। लेकिन एक सिंगल मतलब कि अब जो मेरे बड़े भाई हैं वो सन्यास है, वृंदावन में उनका आश्रम है, तो मुझे परिवार की तरफ झुकाव हुआ कि आपको दरभंगा में ही रहना है, तो मैं दरभंगा आ गया। तो बच्चों को सबसे पहला जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था वो साइंस के प्रति था कि जिस चीज़ को आप देखते हैं उसमें भी डिफरेंस आ सकता है, तो ये डिफरेंस क्यों आता है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि आप चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज नेवर अंडरस्टैंडिंग यू हैव द ब्लेम करेंगे, अंधविश्वास में रहेंगे या कोई आपको ठग लग सकता है या कोई आपकी ज़िंदगी को भी तबाह कर सकता है। तो वहाँ मैंने कटी हुई रस्सियों को तोड़ के जोड़ के उनको दिखाया कि कैसे कोई जादू का मैजिक होता है, वो मैजिक नहीं है, वो साइंस का एक आर्ट है जिसको आपको वो परफॉर्म करते हैं और उससे अट्रैक्ट होकर के आप उसके डिवोटी हो जाते हो कि ये ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि जितने भी अभी जो ढोंगी बाबा हैं, पत्थरों को माला फिलोप्थलीन नाम का पाउडर आता है जिसको वो टच करते हैं और आपसे पैसे ठग लेते हैं। एक्चुअली वो रंगे हाथ में पकड़ने में भी हम लोग फिलोप्थलीन वाइट तरह का पाउडर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो अनलिटरेट हैं वो नहीं समझ पाते हैं और एक तरह का ये मिथ हो जाता है और ये एक एजुकेटेड पर्सन के पास भी जलाते हैं। बच्चे भी जब तक उनको इसके प्रति कंसंट्रेट होकर के ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है तो वो लोग भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास जैसे ही एक ट्रेडिशन मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर होता है तो वो भी उसको मान लेते हैं विदाउट जस्टिफाई, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। तो वहाँ मैंने बच्चों को इंटरेस्ट किया तो लगभग मोर देन 30 to 32 स्टूडेंट ने इसमें अपियर हुआ कि नहीं सर यहाँ ये एक्टिविटी नहीं होता था। तो बच्चे कंटिन्यूस मोड में अपने क्लास में तो पढ़ते ही हैं, तो मैं यहाँ आकर के 2 दिन स्टार्ट किया हूँ जिसमें एक भी अगर मैं प्रिंसिपल समझा रहा हूँ तो उसका पहले एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ और उनका ऑब्जर्वेशन जानने का, चूंकि बच्चे को का एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो अब यहाँ बच्चे कम होते हैं लेकिन इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है और लोग समझ रहे हैं क्योंकि क्लास में भी उनको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। तो मेरे पास यहाँ फ्रीडम है कि मैं जितना भी समझाऊं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब तक वो नहीं समझ पा रहे हैं तब तक उनको समझाना है और प्रॉपर उनको टाइम देना है। तो ये चीज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारे जो सीपीसी सर मुकुल सर हैं उनका कल ही जैसे था तो कि ये मैसेज हम लोग के पास सर्कुलेट आया कि इनमें जोड़िए। तो चूंकि यहाँ मिथिला लोक उत्सव हो रहा था तो मेरा आज का जो टाइम है इंटरसेक्ट कर रहा था कि मैं पोलो मैदान में था, तो आप लोगों को ऑडेबल जो है सो काफ़ी चैलेंजिंग होता, तो मैं विदाउट एनी इंटरप्टेड क्लास का मैं भी अपियर हो सकूं ताकि समय मिले तो मैं ऑब्जर्व कर सकूं ताकि बच्चे को और मोटिवेट कर सकूं। इसको जानने के लिए मैंने ज्वाइन किया, बट मेरा अटेंडिंग जो इसमें नहीं रहा एज पर वोकल पार्टिसिपेंट्स। हालांकि मैं ऑडेबल आपका भी सुना और विजुअली मैं यहाँ भी रहा। तो ओवरऑल यही रहा कि आज के बच्चे जो हैं वही हमारे कल के साइंटिस्ट हैं। तो जिस तरह से जिस मिशन में आप लोग हैं कि इंजीनियर श्री धवन ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते तो जितना भी सीखा वो समाज को लौटा दे, और ये एक ट्रांसफॉर्मिंग है क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं तो अपने बैकबोन के लिए फुटप्रिंट तैयार कर रहे हैं। तो अगर मैं कर रहा हूं तो हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी आज अक्षर कर रहा है तो इसके साथ साथ दूसरे लोग कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे लोगों के मतलब कि सारे क्लास के लिए सेम क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन थे जो कि उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से था क्वेश्चन। तो उसमें सारे क्लास के, कोई 9th में थे, कोई 11th, सबको अपने वर्ग में बांट दिया और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चनिंग किया ताकि वो जाने समझे। फिर उन लोगों को पेंटिंग करवाया क्योंकि साइंस डे का मीनिंग और पर्पस भी यही है कि आप साइंस को अवेयरनेस करें, किसी चीज़ को आप रूढ़िवादिता, कस्टम यूज नहीं हो जाए। हर चीज़ के लॉजिक के पीछे आपका थिंकिंग होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा। तो इसलिए चाहे वो
पैरेलल सीरीज हो इलेक्ट्रिक करंट का, या फिर लाइट चैप्टर हो या साउंड हो। जैसे आज सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सबसे हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन है कि हीलियम है, सारे लोग लगा रहे थे। तो पहले 9 ग्रह थे। तो ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज का जब तक आपका ऑब्जर्वेशन हाई लेवल पे नहीं पहुंचेगा, या ऑब्जर्वेशन आपका कितना महत्वपूर्ण रखता है, ये जब तक बच्चे नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जनरेशन कहीं से बदलाव होकर के नहीं आएगा। आइंस्टीन या कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे, इसी ग्रह से आए थे। तो उसका नर्चर और नेचर, लेकिन उनको अगर सही से नर्चर नहीं किया जाए तो उनका प्रतिभा भी डीम हो जाएगा। तो आज अगर मैंने एक एक्टिविटी किया, उसमें अक्षर जो है उसमें आया, और सबसे बड़ी बात है कि इसके क्लास में 2-3 बार मैंने इसको परसुएट भी किया हूं कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेटेड है, और जो कि एक हैबिट मेक्स परफेक्ट मैन। तो यहाँ हैबिट्स कौन सी हैबिट्स? ओनली गुड हैबिट्स। हैबिट्स कुछ भी हो सकता है, ओनली गुड हैबिट्स मेक यू परफेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बड़ों के इंस्ट्रक्शन में, ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो हमारा हर एक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाता है, फिल्टर हो जाता है कि हम कुछ करेंगे गलत तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये अप्रिसिएशन आप लोगों के द्वारा मिलता है तो बहुत अच्छा मिलता है, और इसी मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और बच्चे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो रामानुजन हुआ, उसके जितने भी सारे हमारे पास उत्तर थे, जैसे डॉक्टर सलीम अली का पक्षियों के ऊपर रिसर्च है, तो उसके चीज़ों से मैंने बच्चों को, गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं, कौवा मैना की कहानी अब सिर्फ हम कविताओं में पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि शहर में Yes, sir. ऐसा नहीं है कि वो प्रजाति से विलुप्त हो गए, शहर में पेड़ नहीं है, आपको वो चीज ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा है। अब कोयली के देखेंगे, उसके पंख को देखेंगे, कैसे माइग्रेट कर जाता है एक पशु पक्षी एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि उनके पास जो है टेम्परेचर के साथ एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, और एकोमोडेट करते हैं तो या तो वो सदाबहार हैं, या फिर जहां उनको एनवायरनमेंट मिलता है वो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। इस तरह से एक छोटे आसान, चूंकि बच्चे का भी जो है एक क्लास रहता नहीं है यहाँ की, मतलब कि 6 स्टैंडर्ड के आएंगे और इंस्ट्रक्टर मैं ही रहता हूँ, इसलिए मॉडरेट करके कि सारे बच्चों को, और उससे जब छोटा बच्चा कभी ऐसा सवाल पूछ देता है जो बड़े आज तक उसको देखे ही नहीं, तो एक ग्रुप लर्निंग जो है ये बेटर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है कि एक छोटा बच्चा बड़े क्लास में बैठा है और छोटे बच्चे का ऑब्जर्वेशन जो उनका बचपना खो गया है, वो यहाँ एक ग्रुप लर्निंग और कंबाइन लर्निंग में वो सारा चीज सीखने को मिल जाता है। एक मिडिल स्कूल का बच्चा था 2 क्लास का, आज 6 क्लास में डीएवी में बच्चा पढ़ता है, वो मान लीजिए हमारे 20 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन लेके आया है, और सेम बच्चा एक मिडिल स्कूल में 2 क्लास में पढ़ने वाला वो भी उतना मार्क्स लेके आ गया। तो रिसोर्स मैटर नहीं करता है, हर बच्चों की अपनी एक जो इंटरनल डिसिप्लिन है, या उनका जो गोल है कि उनका जो मेक हैबिट्स है कि मैं आगे कर सकता हूं, तो प्रतिभा कभी भी पहचान की मोहताज नहीं होती, वो आगे बढ़ जाएगी। Yes. अच्छा, थैंक यू रामशंकर जी। हम लोग बहुत प्रभावित हुए आपके इस प्रयास से। बल्कि मान लीजिए कि मैं पंकज जी को कहूंगा और अमरनाथ जी को कहूंगा कि आपको, हम लोग भी आपके पीछे हैं और हम लोग भी साथ रहेंगे। आप जो ये अंधविश्वास उन्मूलन का जो एक प्रयास दरभंगा में कर रहे हैं, बहुत जरूरी है ये। तो जब कभी भी जरूरत पड़े अब तो जैसे हम लोग को आपको, बताया गया था कि खुले आग पे मैं भी चल सकता हूँ, उसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि किसी चीज को जलने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। हम एक पॉइंट पे 1 सेकंड का 8वां सेकंड होल्ड ही नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉपर टेम्परेचर हमको जलने के लिए मिलेगा ही नहीं। और हम लोग 1 क्विंटल कोयले को जला करके उस पर नमक छिड़क देते हैं। नमक से क्या होता है, जो भी उसके डस्ट हैं जो हमारे पैर को शॉक कर सकता है, वो मॉइस्चर होने की वजह से वो नीचे बैठ जाता है, और धधकता कोयला कभी भी आपकी स्किन में टच ही नहीं कर सकता है। तो एक साइंस का सहारा लेकर के जो अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, वो आम लोगों तक इंफॉर्मेशन देते हो कि देखो मेरे पास ये हो गया, ये हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो साइंस है। तो बच्चे को जब 10 बच्चे समझेंगे तो वही आगे जाके सर्कुलेट करेंगे, और सच्चाई बात बहुत देर तक पहुंचती है, और तब तक झूठ जो है दुनिया का दूसरा चक्कर लगाने लगता है। तो ये चीज है।
तो ये चीज़ आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया। और ये अक्षर है, इनकी नहीं, मम्मी भी टीचर है। आप जो दरभंगा में कर रहे हैं, आप हम लोग चाहेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ें इसमें, और हम लोगों का भी कोऑपरेशन साथ में रहेगा ही रहेगा, इसमें बिल्कुल सर। कोई शक नहीं है इसमें, बिकॉज हम लोग भी असल में वही कुछ करना चाहते हैं। पंकज जी ये चला रहे हैं प्लेटफॉर्म, अमरनाथ जी अपनी समय और प्रतिभा से अपनी इसको कर रहे हैं, तो ये तो आपके पीछे में है। आप जी सर, मेरा सर नंबर करिए नोट कर लीजिए, जो भी डिटेल्स हो तो उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि सीपीसी सर के पास पूरे मतलब कि डिपार्टमेंट का सारा काम रहता है। और आप लोग चूंकि साइंस के रिलेटेड डिवोटी हैं या फिर एजुकेशन को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो मैसेज हो तो वो मुझे डायरेक्ट सर्कुलेट कर देंगे, तो मुझे ईजिली होगा, हम तक आपके पास जो है मैसेज है डायरेक्ट कन्वे हो जाएगा। तो तो मेरा नंबर है आप लोग 87। वहाँ पर ये जो अंधविश्वास वाला पार्ट जो आपने कहा, तो वो सिर्फ ये साइंस डे में कर रहे हैं या सारा साल करते हैं आप? नहीं नहीं, एक्चुअली 2010-11 में जब डॉक्टर नरेंद्र, अभी शायद वो हैं कि नहीं है वो भी मुझे करेक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन उनका बुक, उन्होंने जितना हम लोग को कुछ सिखाया या जिस मकसद से सिखाया, वो सारा हम लोग को बताया गया था कि आगे आप हर स्कूल में जाकर के इसको परसुएट करना है। लेकिन वो फिर लास्ट में जो है वो धरातल पे हो नहीं पाया, वो हम तक ही सीमित रह गया। मतलब अच्छा, जो भी हम लोग 4-5 लड़के गए थे वो बस वहीं तक हो गया। फिर डीओ चेंज हो जाते हैं, उन तक वो कन्वे नहीं कर पाते हैं लोग, फिर उस चीज़ को सर्कुलेट नहीं किया जाता है। फिर कोई ऐसे आएंगे नए योद्धा, जब वहाँ से फिर नया इन्फॉर्मेशन आएगा फिर सर्कुलेट होगा। तो ये चीज़ है। बाद बाकी हम लोग अपने निजी स्तर से तो प्रयास करते हैं कि जब भी मिले उस चीज़ों को प्रैक्टिकल करें और बताएं, क्योंकि ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ मिला मौका तो मैं यहाँ के बच्चों को परसुएट करता हूँ। तो ये चीज़ है। तो मेरा नंबर है सर 8797 ना डबल ये वन। नंबर जो है ना, पंकज जी को आप भेज दीजिए। ओके सर, मैं वो भेज। वो जो हम लोग का जो ग्रुप जो है व्हाट्सएप में, तो उसमें डाल देंगे। तो पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शनिवार और रविवार को जो है ना इसको ज्वाइन करें, हम लोग इसी बात को ही डिस्कस करते हैं। जी सर। तो और आप, क्योंकि हम जब लोग भी तो मौका मिले अमरनाथ ये जी अमेरिका में रहते हैं, हम कलकत्ता में रहते हैं, पंकज जी बॉम्बे में हैं, पुणे में हैं, जी जी। तो आप दरभंगा में, इनका आप जो तो है ग्राउंड उदय पे जी है। जी सर। जी सर। बॉस हैं। तो नहीं, ऐसा है कि हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वही हम लोग भी कर रहे हैं, तो ये बड़ी यस अच्छी सर। बात है। तो सबको जोड़ने की जरूरत है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इंडिया में कैसे बढ़ाया जाए और अंधविश्वास को कैसे तोड़ा जाए। तो इसका सब और मतलब बाकी है कि तो इसलिए मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो पंकज जी आपसे कांटेक्ट करेंगे, हम लोग जी सर। मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद आपका, और जी बहुत सर, अच्छा धन्यवाद। काम। यस जी सर। सर, धन्यवाद। तो रामशंकर जी क्या बोले, 8797 119 119 125। 125। ठीक है रामशंकर जी, जी ये सर। सेम सेम लिंक है। तो हम लोग रिगार्डिंग साइंस हम लोग सैटरडे को लाइव रहते हैं 8 से 9, और जी संडे सर। के दिन हम लोग जो बच्चे का को जॉब चाहिए, जैसे ग्रेजुएट पास आउट है, ग्रेजुएट फाइनल जी ईयर में सर। है, और जी जिसको यस सर। जॉब सर। चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एसएपी इंटरव्यू प्रिपरेशन सब कराते हैं संडे के 8 से 9 बजे। सेम ठीक लिंक सर। रखिए और हमसे पंकज जी, बोलेंगे। मैं थोड़ा निकल जा रहा हूँ, पर मैं चाहूंगा कि अब रामशंकर जी प्रत्येक शनिवार को और रविवार को जी आए जी हम जी। लोगों के साथ, तो बड़ी खुशी होगी यस हमें। यस हाँ सर, और मैं- हमारे हम लोग को शिक्षक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा पीएम स्क्वायर, जिनके नाम से आप लोग जानते होंगे, उनका भी है कि साइंस के प्रति उन्होंने बहुत सारा बुक लिखा है और मैथिली लैंग्वेज में उन्होंने कन्वर्ट किया है, ताकि लैंग्वेज बैरियर ना हो किसी भी एजुकेशन को लेने के लिए। तो हम बहुत उनको अच्छी भी बात। इनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। निश्चित और उनका निश्चित। सीएम साइंस कॉलेज का पूरा एलुमनाई का ग्रुप ही है, तो ये मैसेज तुरंत बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होगा, जहाँ भी है सारे लोग मिलकर के अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। बहुत खुशी हुई। मुझे यस थोड़ा गेस्ट आए हुए हैं तो जाना पड़ रहा है, नहीं तो आई वुड हैव जी जी। लाइक टू कंटिन्यू, बट मुझे थोड़ा जाना पड़ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच रामशंकर जी, एंड थैंक यू टू एवरीवन। हाँ, वैसे भी अब समय हो गया है मीटिंग का, हम लोग जी सर।
ऑलरेडी ओवर चल रहे हैं। तो जी सर, जी सर। एक बात और रामशंकर जी की, हम लोगों का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है मिथिला डिजिटल वर्ल्ड फैमिली। इसका नाम से ही पता चलता है कि डिजिटल है और पूरे दुनिया में है। तो पूरे दुनिया के जो लोग हैं, वैसे नाम तो इसका मिथिला से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारत या पूरी दुनिया के लोग कोई भी इसमें जुड़ सकते हैं और जुड़ते भी हैं। जी और इसमें जो है अनेक देशों से लोग जुड़ते हैं। जैसे हम हैं, उदय जी अमेरिका से हैं अभी, और भी कनाडा से लोग जुड़ते हैं, लंदन से जुड़ते हैं। तो मतलब अनेक, सिंगापुर से लोग जुड़ते हैं अपनी टाइम के सुविधा के मुताबिक। तो ऐसा है, जी ये जो फोरम है, ये स्टूडेंट्स को और जो एक्सपीरियंस इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके हम लोग बात करते हैं। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल और सही है सर। तो और दूसरी बात है कि हम लोग, इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इसलिए हम लोग इंग्लिश को भी प्रमोट करते हैं। ऑब्वियसली। अ, कि तो ये है, दो चीज करते हैं। तो आप बहुत खुशी हुई जान करके। और हम लोग जो भी ये काम करते हैं, हर दिन उसका रिकॉर्डिंग जो है हम लोग यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो मिथिला डिजिटल वर्ल्ड फैमिली के सारे पिछले जितने भी एपिसोड हुए हैं, हर मीटिंग रिकॉर्डिंग कोई भी आदमी यूट्यूब पर देख सकता है। तो आप भी कभी देख लीजिएगा, और लोगों को भी बोलिएगा कि वो लोग यूट्यूब पर जाकर के देखें, ताकि उनको आइडिया हो कि हम लोग क्या करते हैं। और जी सर। बिल्कुल वॉलंटियर ये काम होता है। सबका स्वागत है, जो लोग भी आकर के अपना टाइम दे सकें। रिटायर्ड प्रोफेसर, हम खुद ही रिटायर्ड हैं, मलिक जी हमारे मित्र हैं, वो भी रिटायर्ड हैं। तो हम लोग जो है टाइम दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे अभी काम कर रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। तो हर तरह के लोग इसमें जुड़ते हैं, और सबका स्वागत है। और हम लोग मिलके काम आगे बढ़ाएंगे। तो आपका आने का बहुत बहुत स्वागत। और आई थिंक पंकज जी, आज अगर किसी को लास्ट मोमेंट में कोई बात हो तो बोलें, वरना I think we can close the meeting today. Yes, Saksham, you joined late, so Saksham, you have any question or want to say something? Hello, Saksham, please unmute. और कॉस्मिक जी अब Yes, sir. joined late today, so you have any question or want to say something regarding science? Sir, I was late because the link had come just 5 minutes ago to my phone. No, no, this link is permanent, so you have no need to take any other link. This is the same link regarding Saturday 8 to 9 p.m. Right? Okay, so you have any question or want to say something? Because now it's 9:30, so we need to close session. You joined late, so I asking. Yes. Saksham, do you have any questions? Hello, Saksham. Yeah. Okay, then yes, Okay, sir. Aryan, you have any question or it's okay No, sir. for today? Okay, Bye, sir. okay, sir. Bye, bye. Thank you, Okay, sir. then everybody, good night. Bye. Bye, 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 sir. sir. Bye. Bye, bye, sir.